लोकसभा में भाजपा के सांसद के अभद्र व्यवहार को लेकर विपक्ष द्वारा उनके निलंबन की मांग की जा रही है। लोकसभा में गुरुवार 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तब अध्यक्ष की आसंदी पर कोड़ी कुन्नील सुरेश बैठे थे। उन्होंने बिधूड़ी से बैठने को कहा, लेकिन वे चुप नहीं हुए। अब बिधूड़ी के इस दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बिधूड़ी को चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा होने पर कड़ी कार्यवाही होगी। हालांकि सदन की कार्यवाही से बिधूड़ी के अपशब्दों को हटा दिया गया है। बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खेद जताया। कांग्रेस अब बिधूड़ी के सदन से निलंबन की मांग कर रही है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी से नदी किनारे रहते लोगों को हुए नुकसान के चलते लोग मुआवजे की मांग के साथ 17 सितंबर को काला दिन के तौर पर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी के चलते नदी किनारे बसे लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों और पशुपालकों को हुए आर्थिक नुकसान के चलते लोगों को खाने तक के फांफे पड़ गए। किसानों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। बीटीपी के महेश वसावा द्वारा इस मुद्दे को लेकर मुआवजे की मांग करते हुए आवेदन पत्र भरूच के कलेक्टर को सौंपा गया। वे 17 सितंबर को काला दिवस घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सारू लगावा माटे अने चापलूसी करवा माटे आ पाणी गोंधी रहे। आपने एमने खबर हती के 4-5 दिवसथी मध्य प्रदेश में वरसाद वधारे पड़े छे, छतां बी कोई एनी बेदरकारी लीधी नहीं। अधिकारीओ अने मुख्यमंत्री અને આ બધા ભેગા થઈને આ પાણી એમના વધામણા નરેન્દ્ર મોદીના વધામણા કરવા માટે બધા ભેગા થયા હતા અને પાણી નહીં છોડ્યું અને આખરે પાણીના સ્તર વધી ગયા અને એને 1800 ક્યુસેક પાણી એ 18 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડી દેવામાં આવ્યું, જેને કારણે આખા અંકલેશ્વર, ભરૂચ, નર્મદા જિલ્લા, આખા વિસ્તાર અને વડોદરા જિલ્લાની અંદર આટલી હોનારત થઈ છે, માનવવધ થયા છે, એમાં જાનવરો તણાઈ ગયા છે અને ઘરો તો પૂરા બરબાદ થઈ ગયા છે। આખી જિંદગીનું કમાયેલું લોકો પાસે આજે કશું રહ્યું નથી। ખેડૂતોનો પાક ઉભો ને ઉભો તણાઈ ગયો છે, ઘણી જમીનો ખોદાઈ ગઈ છે। એનું સરકારની જવાબદારી છે। આ સરકાર કઈ કુદરતી હોનારત નથી। આ સરકારે જાણી જોઈને પાણી છોડ્યું છે, એને 100% સરકારે અને એમણે આ વળતર ચૂકવવું જોઈએ એવી અમારી એ છે। અને આ 17 તારીખ જે છે, આ 23 સપ્ટેમ્બર એ દિવસે નર્મદા જિલ્લા અને નર્મદા જિલ્લાના લોકો અને ગુજરાતના લોકો એને કાળો દિવસ तरीके उजवવામાં આવશે એવી અમે बीटीटीएस અને बीटीपी तरफથી जाहिरात કરીએ છીએ। भरूच में बाढ़ के पानी से हुए विनाश के चलते लोगों में सरकार और नेताओं के प्रति आक्रोश है। बाढ़ के पानी से लोगों को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की राहत इन लोगों तक पहुंचाई नहीं गई है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकरों द्वारा स्पेशल पैकेज की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा कार्यकरों की धरपकड़ की गई। इस मौके पर पुलिस और कार्यकरों के बीच खींचतान के दृश्य भी देखने मिले। आज समग्र पूर पीड़ित विस्तारनी अंदर कोई सरकारनी राहत सामग्री पहुंची नहीं, राहत पहुंची नहीं। ठेर ठेर थी भारतीय जनता पार्टीना धारासभ्योने अने संसद सभ्योने सरकार प्रत्ये फिटकारनी लागणी लोको अनुभवी रह्या छे। आ विस्तारना संसद सभ्य पण चूप छे। अनेक मुद्दाओं पर बायो चढ़ावता संसद सभ्य सरकार सामे केम चूप छे ए पण प्रश्न छे। त्यारे विरोध पक्ष तरीके कांग्रेसनी आ गंभीरता जोईने आ भूमिका अनशननी ऊभी करवानी मजबूरी ऊभी थई छे कि आ विस्तारना लोको प्रत्ये सरकारनुं जे ओरमायुं वर्तन छे, जो बीजा विस्तारमां आ बनाव बन्या होत तो ए तात्कालिक सहाय स्पेशल पैकेज पण जाहेर थई जतुं होय छे। त्यारे दक्षिण गुजरातनो आ विस्तार छे, आदिवासी विस्तार छे, त्यारे आ विस्तारनी अंदर अनेक खेडूतोनी जमीन डूबाणमां गई है और खेती बिल्कुल नष्ट थई गयेली है। अनेक परिवारों घर विहोणा थयेला छे, एनी घरवखरी आखी धोवाई गयेली है। पाणीनी अंदर पशुधनने पण खूब मोटुं नुकसान है। आर्थिक रीते तो 5000 करोड़थी पण वधारेनुं नुकसान अंदाजित कही शकाय एटलुं नुकसान आ विस्तारने थयेलुं छे। त्यारे स्पेशियल पैकेज ज्यां सुधी जाहेर करवामां नहीं आवे त्यां सुधी तंत्रए भले मंजूरी नहीं आपी पण अनशन जारी रहेशे। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई के 4 गांव से 3 नदियां गुजरती हैं, जहां बाढ़ के बाद अब तबाही का मंजर फैला हुआ नजर आ रहा है। डभोई तालुका के 4 गांव से ओरसंग, नर्मदा और हेरन नदी गुजरती है, जिसमें पानी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और भिलोड़िया, धर्मापुरा, आसगोल, अरनिया गांव में पानी भर गया था। इस बाढ़ से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों की कपास, तुअर, दिवेला जैसी फसल
बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। ખેડૂતોને કપાસ જેવો પાક હતો તે કેળ જેટલો કપાસ હતો તેને ઘણું નુકસાન થયેલું છે અને કપાસ બધો આડો પડી ગયેલો છે. જમીનમાં 200 થી 300 હેક્ટર જમીન જે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયેલી છે અને કેળ જેટલો કપાસ હતો તે કપાસ જમીન દોષ થઈ ગયેલો છે, જેમાં તે ભારે નુકસાનના કારણે સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે ખેડૂતોને વળતર ને સર્વે કરીને તાત્કાલિક ધોરણે આપે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. 300 થી 400 હેક્ટરની અંદર બધી જગ્યાએ પાણી ઘૂસી ગયા છે અને અંદરથી એટલું બધું કચરું અને બધું આવી ગયું છે અને કાઢવાની પણ મુશ્કેલી છે. કાચની બોટલો વગેરે બધું આવેલું છે અને સદંતર માટી અને સદંતર ફેદાન કરી નાખેલું છે. તો સરકારને અનુરોધ છે કે વહેલી તકે આનું સર્વે કરાવી અને જરૂર પૂરતી ખેડૂતોને સહાય આલે અને બીજી વખત આવું ના થાય, ડેમ છોડે તો વિચારીને છોડે એવું अनुरोध છે. गुजरात के वडोदरा शहर में एसएसजी हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ शव किसी अन्य परिवार को दे दिए जाने पर विवाद सामने आया है। मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी में पोस्टमार्टम विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही की गई होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार के स्वजन का शव किसी अन्य परिवार को सौंप दिए गए होने का आरोप लगा है। दरअसल नित्यानंद गुप्ता को छाती में घबराहट हो रही थी और गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहां से उनका शव एसएसजी हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, लेकिन जब परिवार उनका शव लेने पहुंचा तो उन्हें शव नहीं मिला। ससरा एक्सपायर થઈ ગયા હતા। હવે સવારે એમને છાતીમાં દુખાતો તો અમે ગોત્રી હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, તો જતા રસ્તામાં જ એમનું ડેથ થઈ ગયું। તો ગોત્રી હોસ્પિટલવાળાએ કન્ફર્મ કર્યું હતું અમારે બોડી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકવાની હતી કે અમારા પરિવારજનો બધા બહારથી આવવાના હતા। તો એના માટે અમે ત્યાં ગોત્રી હોસ્પિટલે પૂછ્યું તો એમને રિફર એસએસજી કર્યું હતું કે એસએસજીમાં પીએમ કરાવો અને પીએમ કરાયા પછી તમારી બોડી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકते। ગઈકાલે બપોરે અમે એમનું મારા સસરાનું પીએમ કરાવ્યું હતું। પીએમ કરાયા પછી અમે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકીને ગયા હતા। સવારે 9 વાગે અમે બોડી લેવા આવવાના હતા। તો બોડી લેવા આવ્યા, સવારથી 2 કલાકથી સોચે એમને બોડી નથી મળતી। એ લોકોને ખબર નથી બોડી કઈ ગઈ। જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે અમારી જોડે 3-4 પીએમ થાય, એની જોડે કોઈ બોડી તો એક્સચેન્જ નથી થઈ ગઈ। તો ત્યાં જે બી ગઈકાલે બપોરે સાંજે એ લોકો જે બોડી લઈ ગયા હતા એનો વિડીયો મંગાવ્યો, ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ તો મારા સસરાની છે। એ લોકોએ ઓલરેડી અગ્નિ સંસ્કાર તઈ કરી નાખ્યો છે, બરોબર છે। હવે આ લોકોની તંત્રની એસએસજીની કેટલી બેદરકારી કે જ્યારે ટેગ નંબર ને બધું પીએમ નંબર બધું મારે તો ટેગ નંબર જોયા વગર એમને બોડી હેન્ડ ઓવર કરી દીધી બીજા કોઈ પરિવારને। માંગ એક જ છે કે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય। હવે કોઈ જવાબ આપવા તૈયાર નથી, હું શું કરું હવે અત્યારે? તો મારે કાયદેસર કેસ જ કરવાનો રહ્યો, કોર્ટમાં જઈશું આના માટે 100%। गवर्नमेंट प्रोसीजर इतनी विफल हो सकती है ये मैं सोच नहीं सकता था। वो भी इतना बड़ौदा माना जाना, अपने इंडिया में सबसे माना जाना एसएसजी हॉस्पिटल बड़ोदरा का है, महाराजा सयाजीराव का ये बनाया हुआ है। ये इतना बड़ा लांछन ये मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ। मैं सुबह जब डेड बॉडी लेने के लिए आया तो बोलते हैं बॉडी नहीं मिल रही है। अरे भाई क्या हो गया? इतना बड़ा प्रोसीजर कि मैं अरे भाई क्या होता है? क्या कोई गेस्टेड ऑफिसर नहीं है? क्या कोई रैंकर आदमी नहीं है यहाँ पे इतनी बड़ी हॉस्पिटल में कि डेड बॉडी एक्सचेंज हो जा रही है और लोग सामने वाला बॉडी लेके चला जा रहा है और जला भी दे जा रहा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर? इस मामले एसएसजी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने इस मामले अपनी प्रतिक्रिया दी। મારી પાસે જે વિગતો હમણાં પ્રાપ્ત થઈ છે એ પ્રમાણે એક મૃતદેહની જગ્યાએ બીજો મૃતદેહ સોંપાઈ ગયો છે અને બીજો મૃતદેહ લઈ જનારા સગાઓએ પ્રોપર આઈડેન્ટિફિકેશન કરેલું અને એમને પોતાના સ્વજન સમજીને એ લોકો નિત્યાનંદ ગુપ્તાના મૃતદેહને લઈને જતા રહ્યા છે અને કદાચ આગળના સંસ્કાર વિધિ પણ એ લોકોએ પતાવી દીધી છે। અમારી પાસે અત્યારે હાલ જે મૃતદેહ છે એ પરિમલભાઈ દવેનો છે। કોઈ એક લેવલે કે 2 લેવલે માનવીય ક્ષતિમાં કોઈની ભૂલ થઈ છે। નોર્મલી જ્યારે પોસ્ટમોર્ટમ બાદ અમે ડેડ બોડી હેન્ડઓવર કરતા હોય છે ત્યારે હેડ કોન્સ્ટેબલ કે કોન્સ્ટેબલ પોતાના બકલ નંબર સાથે લાશ સુપ્રત કરેલ છે સગાને, એવો એક સર્ટિફિકેટ અમને સહી કરીને આપતા હોય છે અને એ સમગ્ર પ્રક્રિયા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની હાજરીમાં એમની જવાબદારી હેઠળ અમારા ફોરેન્સિક મેડિસિનના પોસ્ટમોર્ટમ રૂમના સ્ટાફ કરતા હોય છે। એટલે આઈડેન્ટિફિકેશનમાં સગા દ્વારા કોઈ ભૂલ થઈ હોય એવું લાગે છે। સોંપણી કરનાર અમારા કોઈ સર્વન્ટ દ્વારા પણ કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય એવું દેખાય છે। સિસ્ટમ બહુ વ્યવસ્થિત છે। પોસ્ટમોર્ટમ માટે જ્યારે બોડી સ્વીકારાય ત્યારે એમને એક નંબર અને એક આઈડેન્ટિફિકેશન ટેગ આપવામાં આવે છે જે છેલ્લે સુધી રહેતો હોય છે પીએમ પ્રક્રિયા દરમિયાન અને પીએમ પ્રક્રિયા પછી પણ।
એ ટેગના આધારે જ હંમેશા બોડી સુપ્રત થતી હોય છે. આ કેસમાં એવો કોઈ ચહેરો વિકૃત થયેલ નહીં, એવી કોઈ બર્ન્સની ડેડ બોડી નથી કે કોઈ વ્યક્તિ ડૂબીને મરણ પામ્યું હોય કે જેની અંદર ડીકમ્પોઝિશન થઈ ગયું હોય કે ચહેરો આઈડેન્ટિફાયેબલ ના રહ્યો હોય, એવી કોઈ શક્યતાઓ નથી. એટલે અત્યારે માનવાનું ફક્ત એક જ કારણ છે કે ક્યાંક કોક લેવલે કોઈ માનવીય ક્ષતિ રહી ગઈ હોય. 3 સિનિયર મેમ્બરોની એક કમિટીનું ગઠન કરી દેવામાં આવ્યું છે. 48 થી 72 કલાકની અંદર સમગ્ર ઘટનાના દરેક પાસાઓની તલસ્પર્શી તપાસ કરી રિપોર્ટ અમને સોંપશે અને જે કોઈ પણ કસૂરવાર જણાશે એની પર सरकारी राह पगला लेंगे। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की नवरात्रि देश विदेश में मशहूर है और अब कला नगरी में नवरात्रि महोत्सव की तैयारी भी आयोजकों ने शुरू कर दी है। इसी के तहत वडोदरा में बाल गरबा अड़ुकियों दड़ुकियों का भूमि पूजन किया गया है। 15 अक्टूबर से गरबा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में वडोदरा के गरबा आयोजकों ने गरबा आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। वडोदरा के कारेली बाग में आनंद नगर निकट श्रीपद नगर ग्राउंड में बाल गरबा अड़ुकियों दड़ुकियों का हर साल आयोजन होता है। इस वर्ष भी भूमि पूजन के साथ इस गरबा आयोजन की तैयारियों को शुरू किया गया है। इस मौके पर स्वामीनारायण संतों और आयोजक दिनेश यादव समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस बाल गरबा महोत्सव में 4 साल से 16 साल के बच्चों को ही खेलने की इजाजत होती है। बच्चों को गरबा खेलने के लिए खुला मैदान मिलता है। ऐसे में बच्चों में ये गरबा महोत्सव काफी लोकप्रिय है। अड़ुकियों दड़ुकियों बाल गरबा महोत्सव पिछले 2001 से बच्चों के लिए गरबा का आयोजन करता है। यहाँ पर गाने वाले, बजाने वाले और गरबा खेलने वाले सभी 4 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक के बच्चे ही होते हैं और बच्चों को पूरा एकदम फ्री ग्राउंड मिलता है जिससे बच्चे उसका पूरा भरपूर आनंद लेते हैं। और यहाँ से हमारी प्राइमरी स्कूल है, यहाँ से अच्छे बच्चे गरबे सीख के और फिर बड़े गरबे में वो 16 वर्ष के बाद वो जाते हैं। अड़ुकियों दड़ुकियों ट्रस्ट इसका आयोजन करता है और अड़ुकियों दड़ुकियों ट्रस्ट का ध्येय है बालकों का सर्वांगी विकास। इसलिए हमारी जितनी भी ट्रस्ट की प्रवृत्ति है वो सब बच्चों के लगता प्रवृत्ति हम लोग पूरे साल करते हैं।